ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਮਾਲਟਨ ਤੋਂ NDP ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮਿਸਟਰ ਵਸੀਮ ਅਹਿਮਦ। ਐਜ਼ ਵੀ ਆਲ ਨੋ ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ 2022 ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜੂਨ 2 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਇਹੀ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਮਾਲਟਨ ਤੋਂ NDP ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਸੀਮ ਅਹਿਮਦ ਨਾਲ। A very warm welcome, sir. Thank you so much for having me here on Parvasi TV. It's a great honor to be here and through your channel talking to the audience. सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपके थ्रू जो है चैनल वालों से बात करने के लिए और मौका देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਹਾਊ डिड यू एंटर इनटू पॉलिटिक्स? व्हाट मेड यू एंटर इनटू पॉलिटिक्स? जी, मैं 19 साल पहले कनाडा को आया था। जैसे भी उसके बाद मैं कम्युनिटी में इन्वॉल्व हुआ। आई स्टार्ट प्रोवाइडिंग सर्विसेज। मैं कम्युनिटी में इन्वॉल्व था। जैसे मेरे बाद न्यू इमिग्रेंट्स आते तो मैं उनको हेल्प करता, साथ साथ जो है नीडी फैमिलीज़ जो होती हैं मिसिसागा में, मैं उनको हेल्प करता। और साथ साथ जो है ये मिसिसागा फूड बैंक है जो कि नीडी फैमिलीज़ के उनके लिए मैं फ़ंड रेज़ किया। साथ साथ ट्रिलियम हॉस्पिटल है या ग्रेट वैली और विलियम ऑस्लर हॉस्पिटल के लिए भी फ़ंड रेज़ किया। मैं ऑलवेज़ कम्युनिटी में इन्वॉल्व हूँ। तो कम्युनिटी के इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ मैं ये देखा कि यू हैव टू बी इन्वॉल्व विद एनी पॉलिटिकल पार्टी। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड इन 2004-5 मैं जो है मेरे ख़यालात और NDP के ख़यालात मिलते हुए सोशल डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। सो देन आई स्टार्टेड कैनवेसिंग एंड कैंपेनिंग फॉर NDP कैंडिडेट्स एंड आई हैपन टू मीट जैक लेटन एट दैट टाइम and then he inspired me to take active role in the politics. तो 2011 में मैं जो है ऑफिशियली मैं रन भी किया था प्रोविंशियली एंड फेडरली। और जब से मेरी खिदमत तो चलती रही हैं। मैं स्मॉल बिजनेस ओनर हूँ मिसिसागा में। आई एम्प्लॉय लॉट ऑफ पीपल। आई हैव IT बिजनेस एंड देन आई अंडरस्टैंड द इश्यूज़ जो हमारे इश्यूज़ होती हैं, हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो या ऑटो इंश्योरेंस हो, इस चीज़ें मैं कनेक्ट करता हूँ। एंड देन आई इंटरेक्ट विद पीपल ऑन अ डेली बेसिस, ऑन अ रेगुलर बेसिस, सो आई गेट टू नो द इश्यूज़। सो दिस इज़ द इश्यूज़ विच you and I face, so I'm standing up for those issues. Right. So like you mentioned that your values and the values of NDP match. What are these values that you're talking about? Especially as you know, we believe in healthcare for everyone. We know that NDP की तरफ से ही ये जो है हमारे पास कनाडा में या प्रोविंस ऑन्टारियो में जो है हेल्थ केयर का सिस्टम है। तो हम चाहते हैं कि ये हेल्थ केयर जो है इसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ ना जाए। इट शुड बी मोर पब्लिकली फंडेड। और हेल्थ केयर के हवाले से जैसा कि आपको मालूम है लास्ट 19 ईयर्स में इट हैज़ इन ब्रैम्पटन स्पेशली हॉलवे मेडिसिन था लिबरल के दौर में, फिर कंजर्वेटिव्स हैव मेड इट वर्स 19 ईयर्स में। तो हम ये कह रहे हैं कि हेल्थ केयर को हम और मजबूत करेंगे। विल पुट मोर मनी इन सो दैट द इंफ्रास्ट्रक्चर गेट्स सॉलिडिफाइड इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग मोर जॉब्स। 30,000 मोर नर्सेज को हायर करेंगे। हॉस्पिटल्स बढ़ाएंगे हम ब्रैम्पटन में, पील रीजन में। और साथ साथ 10,000 पर्सनल सपोर्ट वर्कर्स को हायर करेंगे जो कि हमारी फैमिलीज़ में पेरेंट्स हो या ग्रैंड पेरेंट्स हो जो घर में दे वांट टू स्टे फॉर लॉन्गर टाइम इन होम एज वेल एज द लॉन्ग टर्म केयर, तो उनके लिए मदद मिलेगी। साथ साथ एजुकेशन के हवाले से जो है लास्ट 10 से 15 साल से जो है हम देख रहे हैं एजुकेशन जो है डिक्लाइन हो रहा है। काफ़ी कट्स हुई हैं एजुकेशन में। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये है कि about 16 billion is required to fix the education. Liberals have neglected, they have closed down 600 स्कूल बंद कर चुके थे वो। और लास्ट 4 साल में आप देख रहे हैं कि कोविड के दौर में it had made it worse again. So we are saying we have a road map to fix the education as well. अब रही बात है because of COVID a lot of people are staying home, especially the students. हमारा यूथ जो है दे आर इनटू एंग्जाइटी लेवल स्टेइंग होम। काफ़ी मेंटल इश्यूज़ हो रही हैं। अब जो जाकर मैं जब डोर नॉकिंग करता हूँ, घर पर जाके बात करता हूँ, तो काफ़ी पेरेंट्स मुझे कहते हैं कि भाई वी हैव चिल्ड्रन हियर सिटिंग एट होम 16, 18 ईयर्स, 20 ईयर्स। दे वांट टू सी ए साइकियाट्रिस्ट या डॉक्टर को बताने के लिए जो है दे हैव टू पे फ्रॉम देयर पॉकेट टू गेट द कवरेज ऑफ मेंटल केयर। तो हम कह रहे हैं कि मेंटल केयर शुड बी पार्ट ऑफ द OHIP. We want to bring the mental care in under OHIP so that you don't have to pay from your pocket. आपको अपनी जेब से पे करना नहीं पड़ेगा। आपको जो है OHIP के थ्रू कवरेज होना चाहिए। बेसिक डेंटल कवरेज भी जो है बच्चों को कैविटी वगैरह हो जाती है तो पीपल आर स्टेइंग होम। काफ़ी लोग कहते हैं कि वी डोंट इवन गो टू डॉक्टर्स इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड। सो हम कह रहे हैं कि डेंटल कवरेज भी जो है OHIP के थ्रू होना चाहिए। दिस आर द टॉप इश्यूज व्हाट वी फेस। ओके, तो आपने मेंशन करा कि आप 13,000 नर्सेज को एम्प्लॉय करोगे, बट वी नो कि ब्रैम्पटन की पॉपुलेशन इज 700,000 एट द मोमेंट। तो डू यू थिंक ये नंबर्स आपस में कंप्लाई कर रहे हैं?
हाँ, बिल्कुल हम ये 30,000 सिर्फ ब्रैम्पटन के लिए नहीं कह रहे हैं कि ओवरऑल प्रोविंस वाइड करेंगे, और जहाँ ब्रैम्पटन में हॉस्पिटल्स के साथ-साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में हम इन्वेस्ट करेंगे, साथ-साथ जितने नर्सेज़ की ज़रूरत होगी, राइट? जैसा कि पहले की प्रीवियस गवर्नमेंट्स हैव मेड द कट्स, वो तो निकाल दिए थे नर्सेज़ को, राइट? एंड यू नो many nurses have left the job and they have taken the job in other fields. So we are saying that we'll make sure there is an atmosphere for them to work, environmentally uh, the friendly atmosphere, right? So that they can work in the health industry, and we'll create more jobs. We'll hire more nurses. और हम साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि जो फॉरेन ट्रेन डॉक्टर्स है इंडिया से जो आए हैं, राइट, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, जो दे आर स्किल्ड डॉक्टर्स नर्सेस है, हम उनको एक्सपेराइट करेंगे प्रोसेस यहाँ पर जो है. वी विल क्रिएट एन एटमॉस्फेयर वेयर दे कैन लर्न एंड गेट देयर क्रेडिट्स escalated and get absorbed in the system, and they can provide services here. So by using the term creating an atmosphere for the nurses, क्या आप यहाँ पे उनकी मिनिमम वेज इंक्रीज करने के बारे में बात कर रहे हो, या कैसे आप उनके लिए वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे? नर्सेस के लिए तो हम ये कह रहे हैं कि जो उनको चाहिए वो तो बराबर मिलना चाहिए. साथ साथ जैसे आप मिनिमम वेज की बात करें, हमारी पार्टी एनडीपी जो है ये बिलीव करती है कि आज अफोर्डेबिलिटी की बात हो रही है, राइट? हर जगह प्राइसेस बढ़ रही हैं, आप देखो गैस के प्राइसेस बढ़ रही हैं, अफोर्डेबिलिटी की हाउस प्राइसेस बढ़ रही हैं, रेंट इंक्रीज हो रहा है. तो हम ये कह रहे हैं कि लोगों की सैलरी भी उस तरह से बढ़नी चाहिए, राइट? मिनिमम वेज हम ये कह रहे हैं कि एवरी ईयर विल इंक्रीज बाय $1 सो दैट इट शुड नॉट बिकम ए बर्डन ऑन स्मॉल बिजनेस. मिसिसागा माल्टन में काफ़ी स्मॉल बिजनेस ओनर्स होते हैं जो ख़ास तौर पे हमारी जो है एथनिक कम्युनिटी से है, इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से जो आए हैं, वो अपने बिजनेसेस रन करते हैं. उनके लिए भी बर्डन ना हो. हम ये कह रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप करेंगे. स्मॉल बिजनेसेस को वो मीन्स प्रोवाइड करेंगे सो दैट दे कैन एम्प्लॉय मोर पीपल, दे कैन फ्लरिश. विल मेक श्योर दैट दे हैव दोस मीन्स अवेलेबल so that they can expand their businesses. But like you mentioned that you're a business owner yourself and you might know a little about economy. So don't you think with the rising prices, अगर आप wages को भी increase करोगे तो वो spiral of inflation में add करेगा? नहीं, हम आपका क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है, ग्रेट क्वेश्चन है. आई रिस्पेक्ट दैट क्वेश्चन. एट द सेम टाइम वी आर नॉट सेइंग वी आर गोइंग टू इंक्रीज द वेजेस इमीडिएटली. वी आर सेइंग दैट इट विल हेल्प. Cost of living has gone up, right? Affordability is a bigger issue right now which we are facing. जब मैं लोगों से मिलता हूँ तो they keep on asking me what will you do for the gas prices. So we are saying as NDP that will stop the price gouging at the pumps, right? जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर नीचे होता है, right? Previous governments have not done it, both liberals and conservatives. We are saying that we'll bring those companies to table and make sure that these things can be controlled, right? जिससे जो है inflation में फ़र्क पड़ेगा, एक चीज़. और दूसरी चीज़ हम ये भी कह रहे हैं कि जो फर्स्ट टाइम होम ओनर्स होंगे, जो हमारे फैमिली मेम्बर्स वगैरह जो फर्स्ट टाइम घर ख़रीदना चाहते हैं, हम उनके लिए पार्टी कह रही है कि हम जो है आपको लोन देंगे एज लॉन्ग एज यू स्टे इन दैट होम. यू डोंट हैव टू पे दैट बैक. इफ़ यू सेल दैट होम देन यू हैव टू रीपे इट बैक. अदरवाइज यू डोंट हैव टू रीपे दैट लोन बैक. तो इस तरह की हेल्प करेंगे. और 250,000 अफोर्डेबल होम्स हम और बनाएंगे यहाँ पर, और साथ साथ जो है हम 1.5 मिलियन होम्स नए बनाएंगे so that there is a demand, so you have to have a supply for it properly, right? So we will be creating we will be making sure that the 1.5 million homes commitment हमारी तरफ से है. रियल रेंट कंट्रोल की बात कर रहे हैं हम. जैसे कि बड़े बड़े कंपनीज जो है जहाँ पर बिल्डिंग अपार्टमेंट्स होते हैं, यही राइडिंग में भी काफ़ी है. मिसिसागा माल्टन में रेंट इंक्रीज़ हो रहा है. लोग जब मैं जाता हूँ अपार्टमेंट्स में तो बार बार कहते हैं कि भाई हमारा 10%, 20%, 30%, 40% रेंट इंक्रीज़ हो गया. तो विल मेक श्योर दैट द रियल रेंट कंट्रोल इज़ इन प्लेस. Right. So, like you're talking about your riding Mississauga-Malton, तो आपकी what are your views on your riding? क्या specific issues Mississauga-Malton के different हैं than the key issues of the party? नो, ये हम जो है देख रहे हैं कि जो हमारे इश्यूज़ है मिसिसागा माल्टन में वही पार्टी के इश्यूज़ है. ख़ास तौर पे हेल्थ केयर. Health care is the key point here which I'm listening from our when I'm going to the doors, right? Malton में भी और मिसिसागा के साइड पर भी, दोनों साइड पर भी, right? और साथ साथ जो है हेल्थ केयर की बात हो रही है, डेंटल केयर की बात हो रही है, सॉलिडिफाइंग आवर एजुकेशन सिस्टम, ऑटो इंश्योरेंस की बात हो रही है. ऑटो इंश्योरेंस में वी हैव a postal code discrimination, so our party is saying very clearly will end the postal code discrimination, and we'll make sure we have a commission, and we will in next 18 months after we get elected we will cut down the auto insurance by 40%. So that will save you and I anywhere from $700 to $1,700 per year per vehicle, which is a significant saving. So we'll make sure we'll put more money in your pocket. That's how we will increase the affordability, like आपके लिए आसानी होगी. Right. So, and do you feel that decreasing the auto insurance or putting a cut at 40% on auto insurance will somewhere put a burden on the suppliers end?
No, because हम देख रहे हैं कि Canada, it's a vast country. We have other provinces where we have public and private system in place, as well as we are going to bring those auto insurance companies on table. We'll sit with them, and we are saying very clearly, we'll have a commission. They will recommend us what is best required, and based on the experts from the industry, this is how we are saying that 40% is possible to cut down auto insurance. We'll cut the discrimination of postal code, and it is possible. That's why we are saying that in 18 months we will implement that. Okay, that's great. So, like you said that you have been going for door knocking. What is the response that you are getting up till now? Because जैसे कि हम देख रहे हैं एडवांस पोलिंग में इतनी एक्टिव पोलिंग नहीं हो रही है अभी, which is probably a good sign for the ruling party. So, what are your takes on it? देखिए, आप अगेन एक ग्रेट क्वेश्चन है. हमको तो जो फीडबैक मिल रहा है डोर्स पर, काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि वी आर वोटिंग फॉर चेंज राइट नाउ, राइट. आई हैव बीन हियरिंग दिस, whenever I go and talk to people, they are saying that we understand that you are fighting for us, whether it's healthcare, education, auto insurance, we are voting for you. People are asking me questions, how will you do this? And we have answers and justifications to tell them. We have been saying very clearly that we will be responsible with our treasury. We'll make sure that things which matter most to people, we will fix it in a responsible way, right? And ये एडवांस पोलिंग में काफ़ी लोग हमको एनडीपी को ऑलरेडी सपोर्ट किया है. दे हैव बीन वोटिंग. ये राइडिंग मिसिसागा-माल्टन इन लास्ट इलेक्शन इन 2018, एनडीपी was behind by 2300 votes. It was a very low margin compared to the other seats, right? And we are focused. We are targeting this riding. We are going to many doors as possible and reaching out with the message, clear message that we are here to support and improve the healthcare, education, cutting auto insurance, and especially as that announcement of 407 as well, which will help really people of Mississauga-Malton. Right. So, as you mentioned 407, the Green Party also mentioned that they already released the statement before the statement of NDP that they did announce the same thing on their agenda as well. What is your take on it? See, I'm not too sure about them, but I know we took the initiative. There was a study done. So, as 407 is heavily underused. So, especially after the peak hours, it's not used. So, we are saying 12,000 से 21,000 तक ट्रक्स जो है वो 401 यूज़ करते हैं, एंड इट मेक्स ए ग्रिड लॉक. पीपल लाइक यू एंड मी हु कम्यूट ऑन 401 ईस्ट टू वेस्ट और west to east, it takes a lot of time, and we are burning a lot of gas as well at the same time. So we are saying we'll move the trucks to 407, and that could give the trucks also saving anywhere from $60 to $90 per trip. And provincial government have to collect a lot of fines from 407. So we are saying that through those fines we will cover the moving of trucks from 401 to 407, and 401 पर आसानी हो जाएगी. As you know, 12,000 to 21,000 is a big number of trucks. Each truck could take anywhere like 4 to 5 car spaces, right? So if you move that traffic, moving from east to west, commuting to work, going back and forth, meeting family members, it makes our life much easier. तो ये पॉसिबल है, और हम जो है ये इनिशिएटिव लिया. वी मेड एन अनाउंसमेंट हियर इन ब्रैम्पटन, एज वीक और सो बैक, and we will make sure that gets implemented as well. Right. Like you mentioned कि जो cost है वो हाईवे के already existing loan से आप repay करोगे, but that will be for some time. Long term goal क्या है हाईवे से related? हम ये कह रहे हैं कि 10 साल तक की हम जो फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे ट्रक्स को मूव करने के लिए, which will probably cost us around $4 billion. वो फाइन्स जो होते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट के 407 को, वो अप्रॉक्सीमेटली $1 billion a year. So there is a significant saving. We will make sure that that will be covered through fines, as well as हम जो है we will make sure that the things which is important to people, especially whether it's healthcare or education, we will be investing more. And और हम साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि middle class and lower class families, which we all classify in, 220,000 and less who makes money, there will be no increase in taxes. We are asking the bigger corporations to pay their fair share. This is all we are saying, right? So, and that's how we will cover all this, and especially as the Conservative Party has been saying that, they will build the other highway 413, which will cost them $10 billion, which will probably take 10 years or 15 years, who knows how much time. But we are talking about the things which matters most to us right now. हमारी जो अब ज़रूरत है, राइट, हम उस पर बात करेंगे. 407 heavily underused, we will use that. We'll ease the traffic on 401. These are the things which matters most to us, is fixing education, fixing healthcare, investing more in nurses, employing more doctors, employing more nurses, creating more jobs, especially our youth, right? अब जो है schools के बाद जो है अगर आप jobs create नहीं करोगे तो where are
youth will go, right? So we are saying that we'll create skill jobs. हम 1 million creating new jobs की बात कर रहे हैं. Right. Okay, so talking about the jobs, if you do open the job opportunities, Canada, we know कि we need more immigrants here. So what are NDP's plans for the immigrants? As you know, we always support. This is a land of immigrants. We all came as immigrants here. We settle. It's a land of opportunity. We get to do our own thing. Whether business में जाओ या job में जाओ, so we are always a party which will welcome immigrants, and we will have we will be creating jobs. We'll make sure that whether the students who comes here, there are means for them to get into the job industry after they become immigrant and down the road as citizens, right? So we'll make sure there are things in place, especially in terms of job creation. We will create the atmosphere so that the more companies here invest and create jobs, especially small businesses can create more jobs here. And we know the bigger economy is through the small businesses. We are classified as 75% of small businesses. In Canada, it's only few bigger corporations which are in the bigger league, but rest is all small businesses, right? Okay, thank you so much. Any final message that you would like to give to your viewers? Once again, thank you so much for having me on Parvasi channel, and I really appreciate you taking the time to talk to us. And again, through your channel, I would like to say my name is Waseem Ahmed, and I am your candidate from NDP for Mississauga-Malton. Advanced polling is open. Advanced polling will run till Saturday. This is a great chance for you to come out and support us, whether it's for healthcare, for education, for mental care, for dental care, or for cutting auto insurance by 40%, or especially implementing the 407 underuse plan which we have just announced. Those are the things. If you believe, please vote us in advanced polling, as well as on June 2nd is the election day. And for more information, you can go to ontariondp.ca, and if you need to get in touch with me, you can also go to our website waseemahmed.ontariondp.ca. Thank you once again, and we look forward to supporting. We look forward for your support, and we will be looking forward to support you as well. जी ते एसी साडी कॉन्वर्सेशन मिसिसागा माल्टन दे NDP कैंडिडेट वसीम अहमद नाल मिलदे हां अगले प्रोग्राम च.